Hello guys, how are you? Hope you're doing great. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एक्सेल फाइल के अंदर स्पेल एरर्स और अपने डेटा को कैसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस एरर से निकलेंगे। मैं एक डेटा सेलेक्ट कर रही हूँ। ये इस पे एग्जाम्पल डेटा है। आई विल सेलेक्ट दिस डेटा। इस डेटा के अंदर फॉर्मूलाज लगे हुए हैं बहुत सारे। सबसे पहले इसे कॉपी कर लेंगे जहाँ तक मुझे चाहिए। आई डोंट वांट एक्स्ट्रा थिंग्स, सो आई ऑलरेडी हैव मेड न्यू शीट. Okay, so I will paste here as a special. Paste special values. Okay, control Z. I will paste like this. Values and formatting. Okay. Now what will happen is, what will I do next is, it already has, you can see now it has no formulas. No, well, there was a formula in the file, the previous version. Here you can see the formula, 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 formula. And finally, final column also contained the formula. Escape for unselect, or unselect or copying part. अब शीट 1 में वापस जाएंगे और फिर क्या करेंगे, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला फ्री शीट बनानी थी। ओके, सो अब ये डेटा बिल्कुल रेडी है। इसमें चाहे अगर आपको दोबारा से फॉर्मूला एंटर करना है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, अभी फॉर्मूला फ्री शीट है। अब क्या करना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के, ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ जाए। मीन्स जिस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स लिए वो टॉप पे आ जाए, बाकी जिसने लोएस्ट मार्क्स लिए लो पे चले जाए। सबसे पहले कॉलम की टॉप क्या करूँगी मैं, अपना राइट परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज पे सिलेक्ट कर लूँगी लास्ट कॉलम को। ओके, और राइट क्लिक करूँगी और फिर क्या करूँगी, सॉर्ट करूँगी। अब इट्स अप टू यू कि आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट परसेंटेज चाहिए, सो आई विल क्लिक दिस. ओके, सॉर्ट. नाउ यू कैन सी the student first. Okay, alphabetical order is gone. और अब आपके पास जो है नंबर वाइज, रैंकिंग वाइज स्टूडेंट के असेंडिंग हो गई है। अब इस टेबल को थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके, ताकि थोड़े बेटर लुक में आ जाए। लेट मी सेट इट मोर. Okay, now I will select this above thing and change its color as I have changed its formatting. देखिए ये कलर अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के नेम अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, सारे मार्क्स इनके असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, सॉरी हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में आ गए। तो फिर इस पार्ट पे कलर चाहते हैं आप करना तो साफ कर सकते हैं, लाइक actually this one, they are contrasting. now furthermore मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस पूरे टेबल के ऊपर कि जो वर्ड्स हैं, सॉरी नंबर्स हैं, ज़्यादा अच्छे विजिबल हों। तो आई विल डू इट इन एरियल. नाउ यू कैन सी, और देखें एक स्टूडेंट के नंबर थोड़े से और तरीके से लिखे हुए। इस कॉलम नंबर 52, रो नंबर 52 को सेलेक्ट करूँगी और सेंटर में ले आऊँगी। Now you can see they are well ordered. यहाँ पे राइटिंग साइज में कुछ हुआ है, फॉर्मेटिंग हुई हुई, तो राइटिंग साइज की फॉर्मेटिंग करूँगी।
10 million और इस कॉलम में देखें now it's all set. ओके सबका साइज नंबर का साइज स्कैन कर दिए गए हैं. now it's all good to go. करके एक एक करने के बजाय आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे. लाइक सारे कॉलम सेलेक्ट करें सब में राइटिंग साइज एक जैसा हो जाए. now give all them a stamp. okay so now all good to go. देखें सबके मार्क्स सेलिंग ऑर्डर में आएंगे 97, 95, 93, 92 and like this. Okay, so this is where you can do correct your Excel files. If you like the video, don't forget to subscribe. I will see you in the next